Friends, Yali Madad, thank you for joining us. Inshallah, our today's subject is in line with last two subjects yesterday morning and yesterday afternoon, and we will see how all of this is interconnected. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Maulay Mehरबान, या मौलाए मेहरबान, अपने लुत्फ व करम से, with your pleasure and your mercy, come to our help, मौला. या मौला, खुशी खुशी से अपनी रहमत के साथ हम गरीबों की मदद के लिए आ. या मौलाए मेहरबान, या रहमान, या रहीम, या करीम अल अकरम, बेशक तो बहुत ही ज्यादा मेहरबान और रहम करने वाला है, और तू अल अकरम है, तुझसे ज्यादा बेहतर कोई भी करीम नहीं है. या मौलाए मेहरबान, अपने नूर के साथ, अपने नूर के साये में हमें सिरातुल मुस्तकीम पर हिदायत फरमा. या मौलाए मेहरबान, देख मौला, हमारी गुर्बत का हाल देख मौला, देख मौला, हम कितने मोहताज है मौला, कि कोई भी काम तेरी मदद के बगैर हम नहीं कर सकते हैं मौला. या मौलाए मेहरबान, देख तेरा बच्चा किस तरह से हाथ जोड़कर तेरी मदद तलब करता है मौला. या मौलाए मेहरबान, मदद फरमा मौला, मदद फरमा मौला, मदद फरमा. Yali Madad to all the friends again. Our chapter is very simple today, but inshallah it will bring a deep understanding, as we do not preach or teach anything that we do not do it without understanding. What do we teach and preach? Understand first, ilm, and then amal. Understand what you are doing, then practice. Then practice. Let's start with Imam's Farman. What is khidmat and what is voluntarism? Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Maulana Hazar Imam, Toronto, Canada, 19th August 1992. On this blessed day, Mullah says, also keep to the traditions of the Jamaat. Those traditions are proven through centuries of history. Keep your unity. Keep the ethic of your faith. Keep the voluntarism and the sense of service, which has made the Jamaat strong and made it capable of resetting all sorts of difficulties. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Imam Zaman in the many places have talked about ethic of Islam. Khidmat, voluntarism, is part of ethic of Islam. A good Muslim, a good Ismaili,
cannot say, I am on the line. I am within the ethic of Islam, ethic of our faith, and then he or she does not follow the ethic. Our ethic teaches us to be kind, to be generous, to be helpful, to be mindful, always lend a hand where help is needed. That is what our religion, our tariqah, and our imam teaches us. And that is part of ethic of our faith. And what does volunteerism, this service, do for us as individual and as a jamaat? It makes us strong. It keeps us united. आइए इसको थोड़ा हमारी जबान में समझते हैं। खिदमत और वॉलंटरिज्म सोचे समझे बगैर नहीं, कोई भी अमाल पहले इल्म के साथ आगाज करें, उसको सीखें, उसको समझे और फिर अमल करें। इल्म के बगैर अमल नहीं। इमाम इस फरमान में हमें समझाते हैं कि खिदमत जो है वो हमारे मजहब के असूल और एथिक्स का एक हिस्सा है। और ये अमल यानी कि खिदमत और वॉलंटरिज्म वो हमें स्ट्रॉन्ग, मजबूत, इंडिविजुअली भी और एज ए जमात हमको मजबूत बनाती है। और जब जब जमात पर या इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर हमें कोई तकलीफ आती है तो ये खिदमत और वॉलंटरिज्म इन तकालीफ का सामना करने में हमारी मदद करती है। मौला ने बहुत सारी जगहों पर एथिक ऑफ इस्लाम की बात की है। खिदमत और वॉलंटरिज्म एथिक ऑफ इस्लाम और एथिक हमारे तरीके का, और जो इमाम हमें एथिक्स सिखाते हैं, असूल सिखाते हैं, उसका हिस्सा है। क्यों कि एक मोमिन शख्स वो हमेशा नरम दिल, खिदमत गुजार, मददगार, और जहां जहां और जब जब मदद की जरूरत होती है, चाहे वो हाथ से हो, चाहे वो इल्म से हो, चाहे वो समझ से हो, चाहे वो आपके पास जो स्किल है उससे हो, आपके पैसों से हो, या एक अच्छे अल्फाज से हो, हम मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों कि ये हमारे मजहब का हिस्सा है, इमाम के फरमान का एक हिस्सा है। कोई शख्स नहीं कह सकता है कि मैं अपने मजहब के एथिक्स पर चल रहा हूं और वो खिदमत गुजार ना हो, मददगार ना हो, उसके दिल में नरमी ना हो। वो शख्स नहीं कह सकता है कि मैं अपने मजहब के असूल पर चलता हूं, इमाम के फरमान पर चलता हूं।
अभी 2-4 साल कबल, just recently in Diamond Jubilee, Mullah gave a farman in Houston. Lend your hand where help is needed. That is the फरमान. कि क्या फरमाया? अभी ह्यूस्टन में डायमंड जुबली के मौका पर कि आप अपना हाथ मदद के लिए बढ़ाएं जहां जहां, एक जगह पर नहीं, जहां पर भी मदद की जरूरत हो आप अपना हाथ बढ़ाएं. Be ready to help. Extend your hand in help for those brothers and sisters where help is required. Let's come to some of the khidmat, and all of you who have been following this Garib and Nachis and its lecture, you know how my heart goes for the khidmat of shoes company. Today, I will also tell you what is the king khidmat. आप में से जो लोग नाचीज के साथ कुछ अरसे से हैं, आप तमाम जानते हैं कि मेरी नजर में, मेरी गरीब और नाचीज नजर में शूज कंपनी की खिदमत से बढ़कर कोई खिदमत नहीं. लेकिन आज मैं आपके साथ खिदमतों के अंदर बादशाह खिदमत कौन सी है उसका जिक्र करूंगा. Let's talk about the khidmat of the shoes company and which is the king of the volunteerism khidmat. Shoes company. What does shoes company khidmat? Why do I, in my eyes, in my opinion, shoes company is the best of the khidmat? Why? क्या वजह है कि मेरी नजर में शूज कंपनी की खिदमत सबसे बेहतरीन खिदमत है? Because it teaches us humility. It teaches us humility. How many farman? If you do a search on Imam's Faramin, take all of the Faramin and search. Put a word humility. You will be surprised. Imam has used this word hundreds and hundreds of times. Hundreds and hundreds of times. अगर आप फरमान की किताब को उठाएं खाली मौला बापा के हाजिर जामे के और उसको सर्च करें उसके अंदर कि कहां कहां पर मौला बापा ने अल्फाज ह्यूमिलिटी, आजीजी का इस्तेमाल किया है, आपको सरप्राइज होगी. सैकड़ों के ऊपर सैकड़ों मर्तबा मौला ने आजीजी का अल्फाज अपने फरामीन में इस्तेमाल किया है. आजीजी is hard to come by. Humility is a hard subject to teach. But one who have ever given a service in the shoes company, that lesson comes easy. The part of the humility, the lesson of humility is hard to teach. But those of you who have given this service in the shoes company, this lesson comes easy. I have said this in my previous sessions and lectures. In my family, especially my mother, when we were children, every one of us,
my brother and sisters, our first khidmat in Jamaat Khana was by requirement from my mother. You know what that was? We must give duty in shoes company. We did not know why. We were children, right? We did not know what my mother was doing. You know what she was doing? She was teaching us that hard lesson: humility. Humility. Because their lesson was hard lesson. But it came easy with this khidmat in shoes company. नाचीज ने ये बात पहले भी कही है कि हमारी फैमिली के अंदर, खास करके हमारी वालिदा मोहतरमा, हमें शूज कंपनी की ड्यूटी के लिए, और ये मस्त था, हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी कि हम तमाम भाई बहन कम से कम अपनी जिंदगी में एक मर्तबा कुछ अरसे तक शूज कंपनी की ड्यूटी दें। हमें नहीं पता था, हम बच्चे थे। वो हमें क्या सिखा रही थी? हमें आजीजी का लेसन सिखा रही थी। आजीजी एक ऐसा सबक जो हमें सिखाया नहीं जा सकता था, लेकिन प्रैक्टिकली हमसे करवाया गया। I hope and wish and I pray that each one of you have one time or the other have learned their lesson by giving your khidmat in the shoes company. मुझे उम्मीद है कि आप तमाम को अपनी जिंदगी में एक मर्तबा, मेरी दुआ है कि शूज कंपनी की खिदमत आपको नसीब हो ताकि आजीजी सीख सके, क्योंकि आजीजी की कभी कभार कमी होती है और उसको सिखाना हमारे लिए मुश्किल होता है। Look at all these services that a smiley momin, a jamaat, brother and sister can give. Volunteerism outside the Jamaat Khana. That is also a tough duty. Heat, cold, rain, high wind. If you have to stand outside the Jamaat Khana, that is also very hard duty because of the weather. अगर आपको जमात खाने के बाहर की ड्यूटी मिलती है तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है मोमिन पर, क्योंकि कभी इतनी गर्मी होती है और कभी कितनी सर्दी होती है, कभी बारिश होती है, कभी तूफान होता है। ये भी एक बहुत मुश्किल ड्यूटी है। सेकंड ड्यूटी, नाउ वी गोना टॉक अबाउट द इजी ड्यूटी, नादी की ड्यूटी, मुखी साहब के सामने खड़ा रहने की ड्यूटी। One duty, I'm not saying it's a bad duty, okay? That can bring lot of pride in you versus shoes company duty. Remember ilm and practice? In the teaching, you must have examples of the negative and positive. कोई खराबी नहीं है, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिसाल भी तो होनी चाहिए ना। When you are teaching, you must have good examples, not for the reason of criticism. No, 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 no. For the purpose of teaching. If you have to compare two duties, a duty in the shoes company, a duty
in front of the Mukhi Sahib, which one would you pick? Most people probably will prefer to stand in front of Mukhi Sahib. Do you all agree with me? I know we all would prefer to be in front of Mukhi Sahib. Ilm, what is the ilm in that? That duty without humility will bring lot of pride in you. It's not a criticism, okay, my brother, sister? Teaching. Listen to me again carefully. Two duties. Shoes company versus standing in front of Mukhi Sahib. That duty without the humility will bring lot of pride in you. Why? Because you feel like you are controlling the events that is happening in Jamaat Khana. That control part without the humility, underline word, without the humility will bring lot of pride in you. But if you have the ilm, knowledge, understanding, and if you have the humility, you have learned the humility, then that will come easy to you. आपने देखा कि इल्म के साथ अगर जब हम देखते हैं चीजों को तो हमें समझ में आता है। अगर आपके पास शूज कंपनी की ड्यूटी है, मुखी साहब के सामने खड़े रहने की ड्यूटी है, और अगर आपकी ड्यूटी मुखी साहब के सामने खड़ा रहना है, और अगर आपके अंदर आजीजी नहीं है, तो आपके अंदर गुरूर पैदा होगा। क्यों गुरूर पैदा होगा? क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मैं जमात खाने में जो हो रहा है ना इस वक्त, मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूं, और आपके अंदर गुरूर, प्राइड पैदा होगा। लेकिन अगर आपने आजीजी सीखी होगी तो आराम से आप ये ड्यूटी अदा कर सकेंगे। इल्म, 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 लर्न, लर्न, लर्न। आपने देखा क्या फर्क है? What are the other duties in Jamaat Khana? There are some quiet, invisible, hidden duties in Jamaat Khana. What are those? The people sitting behind the change part or in the Huzur department. That is very tough duty because you give duty and nobody knows what you're doing. You have to keep lot of secrets and you have to be very quiet. You cannot disclose that you are in Huzur department. You cannot disclose. Don't be one who have a duty of Huzur department. Don't disclose. Don't talk about it. Quietly do that duty. That's a tough duty. What are the other duties? Have you ever seen Mayat committee duty? That is another tough duty. Mayat committee. Because this duty can be called at the middle of the night, during your work hour, during your vacation, during your family time. When a funeral happens, you are called upon. That's a tough duty. एक और खिदमत जो मैयत कमेटी की खिदमत है, बहुत ही मुश्किल खिदमत है। क्यों? कि उसमें वक्त का तयन नहीं है। आधी रात को भी फोन आ सकता है, काम के वक्त भी फोन आ सकता है, वेकेशन के वक्त, फैमिली के वक्त, खाना खाते वक्त, कभी भी फोन आ सकता है और आपको जाना पड़ता है। ये ड्यूटी भी बहुत मुश्किल ड्यूटी है
लेकिन ये खिदमत बहुत बड़ी खिदमत है, बहुत बड़ी खिदमत है. Then what is the next khidmat that we can see? Where you are quietly asked to check on other families, making home visits. When Mukhi Sahib or Social Welfare Board or other senior citizen groups, when they call upon you to check on the Jamaati members, on sick, on senior citizen, people in need, where you have to make home visits. That is another tough duty, because in that duty also, which is invisible, people, Jamaat don't see that. But you are called in the middle of the night, during your work hour, during your vacation, during your family time. You can be called upon any time to follow up on a family. एक और मुश्किल जो खिदमत है वो सोशल वेलफेयर की खिदमत है, जहां पर आपको आधी रात को भी फोन आ सकता है कि फला फला के घर पे जाओ, वो बीमार है, वो जरूरत में है, वो गिर गया है, वो बीमार हो गया है. बहुत ही मुश्किल ड्यूटी है. Let's read one or two more farman, then I will tell you about the king of the khidmat. King of the khidmat. There are two more faramin of Mola Bapa. And I love this farman in Calgary 2018. Maulana Hazir Imam during the Diamond Jubilee, 10th May 2018, in this farman, and listen to these words that Mullah used. I also take this occasion to convey my best affectionate blessings to all the volunteers in the Jamaat who have done such excellent work. I think my grandfather expression was work, no words. My farman to you is work and many words. And I will explain this in a minute. So communicate, laugh, enjoy life. And I give you best loving blessings for the happiness, for the long life, and for the strength on Sirat al-Mustaqim. Ameen. Our all motto was, and I believe last week on this session we were talking about, that you give, सीधा से दे, उल्टे हाथ को पता ना चले, खामोशी से अपनी ड्यूटी अंजाम दें. Work, no words. That was the motto given to us by our 48th Imam. I remember there is a Khidmat committee room in Kharadar, across from Kharadar Jamaat Khana. That is our old Mayat room. On top of that it says Khidmat committee, work, no words. You do your duty quietly. Mullah Baba said, no, he changed that. Work and many words. Communicate. Teach other. Become an example. That is not a pride. You show others what you are doing. Teach your children. Teach your friend. Teach your Jamaat. Communicate. Laugh. Enjoy. So they follow on your example. You become that word of the voice of logic and intellect.
voice of reasoning. Remember this word, voice of reasoning, why you are doing what you are doing. Communicate, teach, become an example. इस फरमान के अंदर मौला पापा अपने दादा की मिसाल देते हैं, 48 इमाम की, कि मेरे दादा फरमाते थे कि आप खिदमत करें, बोलने की जरूरत नहीं है, शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, वर्क विदाउट वर्ड्स, वर्क नो वर्ड्स। और यही हमारा 100 साल तक मोटो था। फिर मौला पापा ने फरमाया कि नहीं, उसको बदलें, अब नया जमाना आया है। पहले हम कहते थे कि सीधे हाथ से दो उल्टे हाथ को पता ना चले, मौला पापा ने चेंज कर दिया वो, वर्क एंड मेनी वर्ड्स। क्या मतलब है कि आप काम करें और दूसरों को भी सिखाएं, एक एग्जाम्पल बने, एक रोल मॉडल बने, अपना काम जो आप कर रहे हैं वो दूसरों को भी बताएं, ताकि वो भी आपके पीछे पीछे इस खिदमत के अंदर आ जाए और खुशी खुशी से काम करें ये, और अपनी जिंदगी को इंजॉय भी करें साथ साथ में। देखा आपने, एक जमाने में खामोश खिदमत की अहमियत थी, आज खिदमत भी करें और दूसरे को सिखाएं भी। यानी कि यहां पर सिखाने पर इम्फिसाइज किया गया है कि आप खुद भी खिदमत करें और इस खिदमत के बारे में दूसरों को भी बताएं, ताकि वो भी इस खिदमत के अंदर आए। जमाना बदल गया, नया जमाना आ गया। वर्क नो वर्ड was the old teaching. Work and many word is the new teaching. The second farman, the volunteers and also those spiritual children who are given years of devoted service in an honorary capacity to my Jamaat. These spiritual children are setting a magnificent example of work in the true path of Islam. They are giving of their time, their energy, and I hope and pray this example will continue forever in my Jamaat. Maulana Hazir Imam, March 1976. What is the understanding in this farman? That there are two kind of khidmat guzar. Those volunteers who are visible, one. Number two, there are volunteers who also are paid volunteers. For example, there are paid missionaries and volunteer missionaries. Another example, there are paid social worker and volunteer social worker. There are paid employees of the Imam and the Jamaat Khana, and there are honorary Khidmat Guzar in Jamaat Khana. There are two kind. And Mullah says those who are honorary, they are actually setting up a magnificent example for the generation, for the Jamaat. And that is the ethic of Islam. That is on the true path of Islam, where you are giving your time, your energy, your efforts, your knowledge, even your money. And that is setting up a good example on the ethic of Islam, on the path of Islam. दो किस्म के खिदमत गुजार है, एक वो जो खिदमत करते हैं लेकिन उसके साथ साथ वो पेड पैसा लेकर खिदमत करते हैं। जैसा कि दो किस्म के मिशनरी होते हैं,
पेड मिशनरी होते हैं, वॉलंटियर ऑनरी मिशनरीज होते हैं। सोशल वेलफेयर बोर्ड में पेड एम्प्लॉय होते हैं, ऑनरी एम्प्लॉय होते हैं, ऑनरी खिदमत गुजार होते हैं। और जो ऑनरी खिदमत करते हैं, मौला फरमाते हैं कि उनकी मिसाल बहुत ही जबरदस्त मिसाल है, क्योंकि वो एथिक ऑफ इस्लाम, असूल दीन के अंदर आते हैं वो, और वो सिरातल मुस्तकीम पर, इस्लाम के रास्ते पर है, जहां पर वो अपना वक्त भी देते हैं, अपनी जान भी देते हैं, अपना पैसा भी देते हैं, और सब कुछ वो इस्लाम की राह में इमाम के फरमान के अंदर देते हैं। नाउ this is the time for me to tell you what is the king Badishah Khidmat. Which Khidmat is the king of the Khidmat? Badishah Khidmat. There is one Khidmat which is the king of the Khidmat, and that is also come from the Farman of the 48th Imam. Imam says, I'm paraphrasing, those who do ibadat, they salvage one soul, his own soul. But those of you who teaches ilm to others, not only they are salvaging their own soul, they are taking the entire Jamaat toward the salvation. REC, teachers, and those great scholars within our Jamaat, they give their time, knowledge, energy, and effort without paid, voluntarily. Honorary teachers. Not only they are thinking of their own soul, but by teaching others, they are working for the salvation of the Jamaat. Let me remind you of Pir Sadruddin. He taught, he gave Gnan to, he converted Hindus into Ismailis. Teaching was the key part of his salvation. Generation after generation after generation. 600 years. This khidmat is not over yet. The khidmat that Pir Sadruddin gave in the form of Ginan, ilm, is continuing after generation and generation. Khidmat Pir Nasir Khusro has given. After 1,000 years, this khidmat is not over yet. That is the king of the khidmat. अब बादशाह खिदमत किया है। मौला फरमाते हैं कि जो इबादत करता है वो अपनी एक जान की निजात के लिए करता है, लेकिन जो दूसरों को इल्म देता है वो ना सिर्फ अपनी रूह की निजात बल्कि तमाम जमात की निजात का बाइस बनता है। जिस तरह के नाइट स्कूल के टीचर्स और वो आलिम टीचर्स जो बड़े पैमाने पर जमात को इल्म देते हैं, वो इमाम की नजर में बादशाह खिदमत है, क्योंकि ये खिदमत खिदमत जारिया है, खत्म नहीं होती है। पीर सदरुद्दीन की मिसाल लें, अनंत करोड़ी किस तरह से मेरे भाई 600 साल पहले जो उन्होंने इल्म व गिनान दिया, आज भी
पेदी दर पेदी, जन्म के बाद जन्म, कितने सालों से आज भी ये इल्म जारी और सारी है हमारी समझ और निजात के लिए। ये बादशाह खिदमत है। पीर नासिर खुसरो ने जो 1 साल कबल, 1000 साल कबल इल्म दिया था, आज भी जारी व सारी है। हजारों लाखों करोड़ों रूहों को वो तार गए हैं और आज भी तार रहे हैं। एक ऐसा मजबूत दरख्त जो आज भी फल दे रहा है। Such a strong tree of the ilm and ginan, which fruit is still giving, giving and giving. That is the king of the khidmat. Badishah khidmat hai. Let me finish this session with a farman. And there are more farman. Lastly, I would like to repeat to you how extremely happy I have been with this visit, and particularly the volunteers and those who worked without a badge, volunteer, invisible volunteer, without a uniform, but who still worked. I would like them to know how deeply happy I have been with the service they have rendered, with the example they have set. And this is an example which deserves not only the highest commendation, but it is also deserve being followed in other part of the world, not only in East, but the West equally. They have set a fine example, and I congratulate them. I give to each every one of you individually once again, to your families, to your children, to your Jamaat, my warmest, my most affectionate, and my best loving blessings. खाना वदान, खाना वदान, खाना वदान। आप में से वो वॉलंटियर जो बेज के साथ, यूनिफॉर्म के साथ है, और वो वॉलंटियर जो यूनिफॉर्म के बगैर, बेज लगाए बगैर काम कर रहे हैं, बस काम में मशगूल है। मौला फरमाते हैं ये इन्होंने मुझे बहुत ही डीपली खुशी फराम की है और इनकी एग्जाम्पल बहुत ही ऊंची है। Mullah says, my beloved spiritual children, every time I visit my Jamaat, there are many murids who offers voluntary service, and there are those who I see with my eyes and those who I feel with my heart. Those who I see with my eyes, those who are visible, and those who I feel with my heart. And the volunteers in Jamaat who have done this wonderful work for this visit, to them I convey my best affectionate blessings. Khana Vadan, Khana Vadan, Khana Vadan. I would like them to know how happy and proud I am of the work that they do for the Jamaat, for the institution, and for me. And I hope that this tradition of volunteerism will remain for many centuries in our Jamaat, because it is that which builds strength and unity, which assists people to find solutions to the problem that they face. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. तुम में वो लोग हैं जो ड्यूटी देते हैं जिसको मैं अपनी आंखों से देखता हूं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो नजर नहीं आ रहे हैं, मैं उनको अपने दिल से महसूस करता हूं। मौला फरमाते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद। Let me stop here so we may have some time for comments
and question. Thank you again for joining this session. G. Subhanallah, sir. In very short time, you explained the volunteer khidmat very well. We just understand this, that volunteer khidmat is just wearing the uniform and just doing khidmat in Jamaat Khana. But there's many ways we can do the khidmat. And most important part is the humility. Shukran. Yeah. Thank Shukran. you, sir. Shukran. Friends, please share your questions in the chat room, or you can use the hand raise feature to ask questions. All right, so I think one of the friends shared in the private chat, work without badge means invisible, and other side Mola says work and work. Please explain. Very good question. Very, very good question. So first, there are two way of setting example. You do want volunteers that we can see with uniform and badge. So they are setting up an example. Then we also need those others who does not have a title, nor uniform, nor a badge, nor a name. So you see them doing khidmat and setting up a great example. How can one do khidmat without the name and the seat and the uniform and a badge? Because you need that example of humility. You need that example by saying it is not necessary. I was talking to one of my sister. She had called me one day just recently, in this week I believe it was, that how come we are not given this duty? And my answer to her was, give duty without seeking the seat, name, and uniform and a badge. Become their hidden volunteer of the Imam. I have an example to give you because you have a wonderful, you understand how you have to set up examples. There was a brand new Jamaat Khana built in Birmingham, Alabama. If there are few people on this line from Birmingham, Alabama. When that first Jamaat Khana was built in Hoover, not in Homewood, the Hoover Jamaat Khana, there was duty assigned. Somebody said, I will stand in front of Mukhi Sahib. Someone said, I will do Nandi. It's brand new Jamaat Khana. Somebody said, I will do this. Somebody said, I will do vacuum. On and on. There was only one duty left that no one volunteered for. And guess which one was that duty? Which that one duty was, and who volunteered for that duty? Can anyone guess? Cleaning the bathroom. You know who volunteered for that? Mukhi and Kamdiya. See? Mukhi and Kamdiya. After the Jamaat would leave, quietly, they would clean the bathroom. आप सोच सकते हैं कि जब इस जमात खाने में वॉलंटियर के लिए लोगों को पुकारा गया, किसी ने कहा मैं मुखी के सामने खड़ा रहूंगा, किसी ने कहा मैं नादी करूंगा, किसी ने कहा मैं पार्किंग लॉट में ड्यूटी दूंगा, सब ने ड्यूटी ले ली। एक ऐसी ड्यूटी थी जो किसी ने भी नहीं ली, और वो टॉयलेट साफ करने की ड्यूटी थी, बाथरूम को साफ करने की ड्यूटी थी। पता है आपको किसने ली वो ड्यूटी? मुखी और कामड़िया ने वो ड्यूटी ली। और कब वो करते हैं? खामोशी से। जब पूरी जमात चले जाती तो ये मुखी कामड़िया बाथरूम साफ करते हैं। ये है वो खामोश ड्यूटी। And your question, I want to come back to that question.
all those volunteers that had offered their khidmat, they learned from Mukhi Kamriya how to give non-uniform, non-beige, quiet khidmat. They learned that. Ji. Subhanallah, sir. So we don't have any question in the chat. Friends, if you have any question, you can unmute your device or you can use the hand raise feature to ask questions. हमारे साहब किसी का माइक अनम्यूट हो गया है, अगर आप उसको म्यूट कर सकें. जी सर, मैंने कर दिया सर. जी. Any comments, any question? या अली मदद. या अली मदद. एथिक ऑफ इस्लाम में एक वर्ड्स है ह्यूमिलिटी, आजीजी. तो मुझे जानने का आजीजी कौन सी टाइप की होनी चाहिए, उसके लिए कुछ समझाइए. जी, जैसा अभी अभी गरीब और अजीज ने समझाया कि किस तरह से कोई ऐसी ड्यूटी देता है कि जो कोई भी नहीं देखता है, वो खामोशी से अपना काम करता है. जिस तरह से बाथरूम साफ करना की एक एग्जांपल थी. दूसरी अच्छी एग्जांपल शूज कंपनी की एग्जांपल है कि आप किसी के गंदे बांस मारते हुए, पानी में पिघले हुए जूतों को हाथ लगाएं, या तो आप आजीजी से पीछे रहकर कहीं पर खामोशी से, आजीजी से कोई खिदमत करते हैं, किसी को पता नहीं चलता है, या आप मुखी के सामने खड़े हुए हैं लेकिन गरूर से नहीं, आजीजी के साथ. इस तरह से खिदमत करनी चाहिए. जी. याली मदद सर. याली मदद. सर जैसे है ना, अगर आपको कोई खिदमत के लिए बोलने में आता है समझो, और दो खिदमत है, आप दोनों नहीं कर सकते एक साथ, तो फिर आप ना अगर बोलते हो एक खिदमत को, तो वो गलत तो नहीं है ना? या उसमें कैसा आजीजी रखना, या कैसे उसको कैसा लेना चाहिए, वो सिखाओ ना सर प्लीज. जी, आप दो खिदमत तो एक साथ कर ही नहीं सकते ना, कैसा करेंगे आप? एक वक्त में आप एक ही जगह हो सकते हैं, राइट? हाँ, दो खिदमत आप नहीं, चार खिदमत भी कर सकते हैं एक साथ, अलग अलग वक्त में, राइट? कभी शूज कंपनी में ड्यूटी दे दी, कभी बाहर ड्यूटी दे दी, कभी नांदी में ड्यूटी दे दी. जिस तरह से हम जिंदगी में कितने काम करते हैं, हम खाना भी पकाते हैं, बच्चों का ख्याल भी करते हैं, ठीक है? हम मल्टीपल टास्किंग करते हैं ना, इसको मल्टीपल टास्किंग कहते हैं. अगर आप मल्टीपल ड्यूटी दे सकते हैं तो आपको करनी चाहिए वो. लेकिन अगर आपके पास एक वक्त में दो ड्यूटी है, तो मेरी नजर में आप वो ड्यूटी दें जो खामोश और आजीजी वाली हो, ना कि जो शो ऑफ वाली हो. फिर वो ड्यूटी करनी चाहिए. जी. थैंक यू सर. शुक्र अल्लाह. जी. या अली मदद. सर, मैं पूछ सकता हूँ अभी. जी. अब ये कोई को खिदमत करने का बहुत शौक है और वो लाचारी से नहीं कर सकता है, तो उसकी खिदमत कबूल करने के लिए क्या करना चाहिए? अमाल का दारो मदार नियत पर है, ये आपके सवाल का जवाब है. अमाल का दारो मदार नियत पर है. जी. Any other comments or question? दूसरा मैं ऐसा भी सुना हूँ कि तो नहीं कर सकते तुम सलवात की तस्वीर निकाल के भी मौला को हाजी जी करके बोले मेरे की ये सेवा करने की इच्छा थी, मैं नहीं कर सकता हूँ,
तो वो तस्वीर निकाल के भी कबूल कर फरमाता है मौला के पास। मेरे भाई आप नियत करें, मौला उसको कबूल करेगा जी। All right, sir. I think we another question in the private chat. Friends asking, sir, you talked about the shoe service and it teaches the humility. So you emphasize a lot on the shoe service. But in North America side, especially, all the shoe services are going self-service rather than full service. So how would you explain this? I have explained that in our previous khidmat or shoes company service session in this very channel. I believe it was up in some other session. Unfortunately, very sad. Unfortunately, very sad, because we are not understanding. We are taking a khidmat of the most pure humility away from the Jamaat and Jamaat Khana. That is the sad part. I wish that would not happen, but I don't know how to rectify that. That is very sad. Gee, that is my humble comment on that. Thank you. Can you say it in Urdu, please? जी, शूज कंपनी की खिदमत ना मिले, उस पर ये बात हो रही थी कि बहुत ही रोना आता है कि हमसे ऐसी आजीजना खिदमत छीन ली जा रही है जी। All right, we have 2-3 more minutes, then we will try to close this session. Any comments, any question? कमेंट सर, बहुत हम्बल कमेंट सर, माशाल्लाह। ये 45 मिनट्स का जो सेशन था वो इतना डेप्थ में था, फ्रॉम द बेस टू द डेप्थ, माशाल्लाह। एटलीस्ट इंडिविजुअली ये गरीब के लिए बहुत डीपली। तो बहुत शुक्रिया। दरवाजे दरवाजे खुलते रहते, अजीजी के बहुत शुक्रिया सर, बहुत 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 शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र हम अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत लोग नवाजिश। हम लोग टटोले जाते, हिल जाते। ऐसा ऐसा लगता है मौला तुम्हारे जरिए हमारे कंधे पकड़ के, जागो भाई जागो, ऐसा नहीं करो। शुक्र मौला, बहुत शुक्र शुक्र, मौला, बहुत शुक्र शुक्र सर। मौला। त्याली मदर, त्याली मदर। Thank you everyone. May Mola be with you. May Mola accept all your khidmat, all your ajizi, all your Um, humility. um, बहुत नवाजिश। thank you very much. It was very Thank nice. No, no, no. Thank you. thank you. Thank you so much. Thank you. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, याली मदद, याली मदद, Thank you, Yali Yali Thank you, Madad. Madad. Yali Madad. Thank you. याली Yali मदद, Madad. याली मदद, Yali Yali Madad. Madad. याली Yeah, मदद, limit, sorry. याली